Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैंने वेश कुमार दास इस वीडियो में JEE Main 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, इफ़ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है f दैट सेटिस्फाई व्हाट f डैश x इक्वल टू f x such that f0 equal to 1/2 and that is equal to f dash 0, then f double dash pi by 3 की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, सो व्हाट वी हैव गिवन हियर, f dash x हमें क्या गिवन है, f x के इक्वल गिवन है. सो आई जस्ट अज्यूम दैट कि लेट f x जो है वो हमारा y है, राइट, ये y है. सो f dash x क्या हो जाएगा, f dash x जो है वो हमारा हो जाएगा dy by dx. So we can write this as dy by dx, f dash x को हमने लिख लिया dy by dx equal to y. Now this is a differential equation and we can solve this using variable separable, right? So मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने क्या किया, इसको dy by y लिखा, dy by y इक्वल टू dx. देन वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस, सो dy by y और ये क्या हो गया हमारा dx, राइट. नाउ वी कैन ऐड इवन व्हाट, लॉग सी ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट. सो ये क्या हो गया हमारा log y हो गया इक्वल टू x प्लस log c, okay, log c. So from here what do we get, log y minus log c, log y minus log c. So this is log y minus log c equal to what, x, right. So from here we can write y by c equal to what, y by c हमारा हो गया किसके इक्वल, that is equal to x. So y by c equal to क्या हो जाएगा, e to the power x. So from here y equal to क्या हो गया, c e to the power x. So basically y is fx. So fx जो है सॉल्यूशन जो है वो आ गया y equal to fx equal to c e to the power x. Now what we have here is कंडीशन हमें क्या गिवन है, y0 जो है y f0 जो है वो क्या गिवन है हमें 1/2 गिवन है. So we can apply this, right, either f0 or this is equal to f dash x, right. So even if f dash x we apply, so this is c e to the power x, right. So मैं इसमें f dash 0 ही रखता हूँ, तो that is what, c और e to the power 0. f dash 0 की वैल्यू 1/2, so this is c e to the power 0 is 1. so c की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1/2. so therefore we can write fx as what, fx हमारा क्या हो गया, fx जो है वो हो गया हमारा 1/2 e to the power x. now we'll differentiate this, राइट, ट्वाइस. सो f डबल डैश x जो है होगा, दो बार डिफरेंशिएट करने पे यही रहेगा, 2 e टू द पावर x ही होगा, राइट. एंड सो हमें फाइंड क्या करना है, f डबल डैश, हमें फाइंड करना है f डबल डैश पाई बाई 3. सो वी कैन सी हियर दैट वी 1/2 एंड e टू द पावर व्हाट, पाई बाई 3. सो 1/2 e टू द पावर पाई बाई 3. सो इफ यू सी द ऑप्शन 1/2 e टू द पावर पाई बाई 3, if you see the option, so which option is the correct option, the second option is the correct option. You can see here the second option is the correct option, right, e to the power pi by 3 and divided by 2, 1/2 e to the power pi by 3. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.